Hello students, now we are going to see the exercise 2.1 of lesson polynomial. In the previous video we have seen the basics of polynomial. As I told you, two things I have not discussed in the previous video because I want to share you that information when the problem is there on the board. Then only we will be able to understand. Okay, the main thing is how to identify polynomial. How we are going to identify that yes it is a polynomial or no it is not a polynomial. Then the other thing is कि हाँ ये one variable का है, two variable का है, three variable, that we can observe it afterwards. But first we have to see that whether it is a polynomial or not. So we have to check whether it is a polynomial or not. The one thing is the power of the variable must be whole number. That is the important thing. Now for example, we have here 4x square minus 3x plus 7. First question is which of the following expression are polynomial in one variable and which are not. Straight reason for your answer. We can give the reason for it, no issue with that. But which of the following expression are polynomial? First we have to tell which are the following expressions are polynomial in one variable. अब polynomial check करने का तरीका what is the method to see that the power must be a whole number. Power whole number होना चाहिए. And in the previous video we have discussed what is power and what is degree. So here the power is 2. Correct? The power is 2, which is a whole number. If it would have been 1 by 2 or minus a negative term, so that would not be a whole number. So therefore this expression should not have been called as a polynomial. So that is very important. This must be a whole number. The power must be a whole number. So here we can see the power is a whole number. 2 is a whole number. We have seen the previous video, the basics of natural number. What is a whole number, what is integer, what is natural number, that we have seen. So here 2 is a whole number. Therefore this expression is a polynomial. चलो एक चीज हो गई, ये polynomial है. Correct. Done. Now what? In one variable. अब one variable में है कि नहीं, ये भी हमको चेक करना. So we will check that whether there are we'll check how many variables are there. अगर x के साथ और कोई variable लगा हुआ है, y, z, a, b, c कुछ लगा है तो वो भी देख लेते हैं. Here x, ये x ही लगा हुआ है. ये तो constant term है, इसको कुछ लगा नहीं लगा कोई problem नहीं. But this is a same variable, therefore it is considered as yes one variable. Correct? So we have to identify, express which of the following are. So yes, it is polynomial in one variable. Okay, and what will be the reason? This includes one variable only, so therefore that will be it. So this is done now. Now let us move to the second question. मैंने कहा था कि we have to check polynomial के लिए हमको सबसे पहली चीज वही चेक करनी है कि हाँ power उसका क्या है. ठीक है. So here the second question is this: y square plus 2. Now y square plus root 2 ऐसा दिया हुआ है. y square we don't have to bother about this constant term. हमारा कोई लेना देना नहीं है constant term के साथ. What we have to see is we have to see the variable. Variable का power. Variable का power क्या है? 2. As we have seen 2 तो whole number है. 0, 1, 2, 3, 4 and so on till infinity are whole numbers. So this 2 is a whole number. Therefore yes, it is also a polynomial. यहाँ पे भी हम लोग same लिख सकते हैं. Yes, it is a polynomial in one variable. That is done. Now we'll move to the third question. Now in the third question, 3 root t plus t root 2. यहाँ पे भी सेम चीज आ गई है. We have to first notice the power of the variable. अब variable यहाँ पे क्या है? root t. तो root t का पावर अगर root t अगर हम लोग निकाल देते हैं तो that will become 3t to the power 1 by 2 plus t root 2. Correct? अब ये अगर पावर बन गया तो this is not a whole number. 1 by 2 is not a whole number. So therefore this is not a polynomial. अब ये polynomial नहीं है. Not a polynomial. Not a polynomial. Now see, अब एक वेरिएबल में कि है कि दो वेरिएबल, उसका कोई झंझट ही नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं भाई. तो ये पॉलिनोमियल है तो इसको कैंसिल, इसका पत्ता ही कट हो गया. सो देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. करेक्ट. सो नाउ आपके पास कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 था,
तो यहाँ पे आपने बोल दिया कि ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। रिमेंबर वन थिंग अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वीडियो आप 2-3 बार फिर से रिपीट करके देख लेना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू ऑब्जर्व दी वेरिएबल ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे भी हमने वेरिएबल का ही पावर देखा था, वो 1/2 था, तब हमने डिसाइड किया था कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ पे भी हमने वेरिएबल का ही देखा था, तो ये होल नंबर था, इसीलिए होगा। क्लियर? सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल सिंस इट इज not having the power as a whole number. Now let us go to the fourth question. Yes, we will see the fourth question again. Now in the fourth question, y plus 2 by y. Let us simplify this. y plus 2 by y. अब ये y को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो that will become 2y inverse. Laws of indices we have learned in 8th standard. y को अगर ये नीचे है, इसको ऊपर लेके जाना है, तो वो मतलब 1/a to the power 1 is equals to a to the power -1. लॉज ऑफ इंडाइसेस ध्यान में होंगे आपके। तो दिस विल बिकम 2y इनवर्स। अगेन अब फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं। यस, वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, वेरिएबल का पावर क्या है, नेगेटिव, सो दैट इज नॉट अ होल नंबर, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो नॉट अ पॉलिनोमियल। जो भी रीजन आपको लिखना है लिख सकते हैं, मैंने आपको रीजन बता दिया कि भाई इसका है ही नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है, बस दैट इज इट। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, x to the power 10, y to the power 3, t to the power 50। देखने में एकदम क्लीन लगता है, अच्छा साफ सुथरा, इन जैसा नहीं है, ये √2 √3 सेट दिया उन्होंने, तो इन जैसा नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर। x to the power 10, y to the power 3, t to the power 50। Which of the following expression are polynomial in one variable? In one variable and which are not? State the reason for it. ये polynomial है क्योंकि आप सबसे पहले यही देखोगे, सब पावर होल नंबर है सर, हाँ ये तो पॉलिनोमियल है। Yes, it is a polynomial, but क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि वन वेरिएबल में कौन से वाले हैं। Yes, it is a polynomial, but it is not a polynomial in one variable. It is polynomial in 3 variables. See, this is one variable, this is second variable, this is the third variable. So in this way we can identify which of them are polynomial or not, and hence we can say that this is a polynomial but not in one variable. So you can write the reasons also. I have explained you everything in this particular question. तो आप अपने हिसाब से reasons लिख सकते हैं, no issue with that. Otherwise you can write it this. So done. Okay, this is to identify only. Thank you.